Hello everyone. So in this video we are going to discuss statement type or word problem based on LCM and HCFC. Every topic almost we have discussed in our last videos for this chapter. Okay, this is the last exercise, also 3.7 for the chapter playing with numbers. Okay, so the word problems, okay, how to solve and how do we identify in word problems means when we have to find out LCM or when we have to find out the HCF. This is the main thing. Okay, identifying, okay, identifying, either we have to identify means what, either we are going to find the LCM in the question or we are going to find out the HCF. This is the main thing. If you will know na, देखो, see, you all know how to find out LCM and HCF. This thing you know very clearly. Okay, ये सबको आता है अब. You have seen the last videos. From there you can easily learn. वहाँ से तुम सबने सीखा है that how you need to find out LCM, how you find out HCF. Everything you know. But the main thing that I am going to show here, that we are going to learn, is how do we identify in a word problem. If a question is having a word problem, in statement type question is there, then how you will find out that we need to find LCM or HCF in the question, है ना, वहाँ पे LCM निकलेगा या HCF निकलेगा. This is the thing ना. So for this ना, we have some terms that we need to see in our question. कुछ टर्म्स होती हैं, अगर हम उनको देखेंगे ना क्वेश्चन में तो हम थोड़ा इजीली ग्रैब कर सकते हैं. Like in the first question of the exercise 3.7, what is given? Renu purchases 2 bags of fertilizer of weight 75 kg and 69 kg. See, 2 bags are there. 2 bags are there. 2 bags are there. One is having 79 kg, sorry, 75 kg weight. One is having 75 kg weight, and the other one is 69 kg. The question is asking, find the maximum value of weight which can measure the weight of the fertilizer exact number of times. Now, the question is asking, find the maximum value of weight. Find the maximum value of weight. The question is asking, find the maximum value of weight. Maximum. Why I am writing? See, question is written in your textbook also. You can see from there. Find the maximum value of weight which can measure the weight of the fertilizer exact number of times. Exact number of times and maximum, that means what? If maximum is written now, if maximum is written there in question, simply समझ आ जाता है highest. Maximum, high, isn't it? To similarity, synonyms, है ना? That means what? You are going to find out HCF. अब देखो क्वेश्चन का मीनिंग क्या है, फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ वेट विच कैन मेजर द वेट ऑफ द फर्टिलाइजर एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम. एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम, वाई? कि कौन सा ऐसा नंबर है जो इन दोनों को एग्जैक्टली डिवाइड करता चला जाएगा. द मैक्सिमम नंबर विच कैन एग्जैक्टली डिवाइड बोथ. मैक्सिमम नंबर विच कैन एग्जैक्टली डिवाइड बोथ. सो व्हाट वी नीड टू फाइंड आउट? HCF. We need to find out HCF. And how do we find? If maximum is written ना, देखो ये कुछ कीवर्ड्स होते हैं टू आइडेंटिफाई, थोड़ा सा ना लॉजिकली, थोड़ा सा एक हिंट, है ना. वी नीड अ लिटिल बिट ऑफ हिंट. दैट इज द थिंग. इफ 75 इज रिटन ना, दैट मीन्स यू नीड टू फाइंड आउट द HCF. सो HCF of 75 and 69. Now you all know how to find the HCF. Last videos you must have seen. 75, 3 2 ja, 3 5 ja, 5 5 ja, 5 1 ja. So factors of 75, I can write 3 multiply 5 multiply 5, like this I can write. Now factors of 69, let's do it. 3 2 ja, 3 3 ja, 23 1 ja. So 69. If I'll write the factors, how much I am going to get? 3 multiplied by 23. So what is the highest common thing you are getting? The highest common factor you are getting is HCF equals to 3. That means the weight of the bag will be how much? 3 kg. The weight of the bag will be 3 kg. A 3 kg bag na,
a 3 kg bag can means measure both these things with a particular, because 3 can divide 75, 3 can divide 69, and it is the highest number that can divide both. So let's move to the next question, second one. This was the first question of your textbook. Second one. Okay, the second question is asking, 3 boys step off together from the same spot. Their step measures 63 centimeter, 70 centimeter and 77. 63 centimeter, 70 centimeter and 77 centimeter. This is given. What is the minimum distance each should cover? अब देखो क्वेश्चन में एक कीवर्ड मिल गया है, मिनिमम. What is the minimum? Minimum similar to what? Lowest. And lowest किस में आता है? LCM में. देख लो, मतलब थोड़ा सा कीवर्ड मिल गया यार. ऊपर देखो, इन द फर्स्ट क्वेश्चन मैक्सिमम वॉज देयर, दैट मीन्स मैक्सिमम मतलब ज़्यादा, मतलब हाई, और हाई का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF. उसके बाद मिनिमम मीन्स लोवेस्ट मीन्स व्हाट? LCM. सो लो least common multiple. Find out the LCM of 63, 70. You will get your answer exactly. See, if 63, 70, 77 is there, 63, 70, 77. Let's find out the LCM. We are going to find out LCM. So just take it. So divide by 2. 63 is not divisible. It is divisible. It is not divisible. Then again 3 2 ja 3 1 ja 35 77. That thing which is not divisible, now we have to write it, and always start from the smallest prime numbers, like 2, then 3 if possible, then again 3 3 7 ja 35 77. Now it is not divisible by 3. Any of the number is not divisible by 3, so we will take 5. 7 is not divisible, but 35, 5 7 ja 77, then 7 1 ja 7 1 ja 7 11 ja. Now 11 1 1 11 1 ja. Okay, you are getting, you can see. So what is the LCM? 2 multiply 3 multiply 3 multiply 5 multiply 7 multiply 11. So how much you are getting? See, 2 3 ja 6, 6 3 ja 18, 18 5 ja 90, 97 ja 630, 630, then multiply by 11. 11 3 ja 33, 11 6 ja 66, 6 9. So what you are getting? 6930. That is the answer you are getting. In this way you can find. देखो थोड़ा सा ना सोचना है, थोड़ा सा सोचना है, मतलब कीवर्ड्स को रिलेट करना है. देखो, इन द फर्स्ट क्वेश्चन मैक्सिमम वर्ड इज देयर ना. मैक्सिमम मीन्स हाई, HCF, highest common factor. Minimum is written in the second question. You can see minimum means low, lowest, least common factor, least common multiple, least common multiple. Okay, in this way just try to think. थोड़ा थोड़ा सा सोचोगे ना तो हो जाएगा. Okay, and try to watch the video in repeated mode. You all know this thing, why I am saying like this. Okay, so now the third one, third question. Find the longest tape which can measure. Again, you can easily identify 825, 675 and 450. 450. These are the three lengths. These are the three length, breadth and height of a room are given. The question is asking, find the longest tape which can measure the dimension. Now see, in your question you are having longest. What is the meaning and what you will find out? अब तुम्हें इससे क्या समझ आ रहा है? LCM निकालना है या HCF? अब देखो फिर से कीवर्ड को, अपने कीवर्ड को देखेंगे. फाइंड द लॉन्गेस्ट. हाँ, फाइंड द लॉन्गेस्ट टेप. लॉन्गेस्ट मीन्स क्या होता है? ज़्यादा. लॉन्ग मतलब लंबा, यानी कि ज़्यादा हुआ. इफ स्मॉलेस्ट इज देयर तभी तो छोटा होता है, बट लॉन्गेस्ट मतलब ज़्यादा. देखो लॉन्गेस्ट को रिलेट करेंगे, वी विल रिलेट इट. इंग्लिश सिनोनिम्स. हाँ, लॉन्गेस्ट मीन्स ज़्यादा, दैट मीन्स हाई, यानी कि मतलब बड़ा, और हाई मीन्स व्हाट यू आर गोइंग टू फाइंड आउट? HCF.
So please try to write out down the answer in comment section. HCF of 825, 675 and 450. Write the HCF in comment section. That is the answer of your question. Is it? That is also the answer of this third question. When you will find out the HCF now, that means what? You will be able to find out the answer. Okay, let's move to the next one, fourth. Determine the smallest 3-digit number which is exactly divisible by 6, 8, 12. The question is asking smallest 3-digit number that is divisible by these three numbers. Okay, just the question is asking smallest 3-digit number that is divisible by all these three. इन तीनों से जो डिवाइड हो जाए, इन तीनों से डिवाइड होना चाहिए. ओके, द स्मॉलेस्ट 3-digit नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 6, 8 एंड 12. नाउ यू विल थिंक, थोड़ा सा ध्यान से, और प्लीज़ ट्राई टू वॉच दिस वीडियो. ये वाली वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है. दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस यू विल सी इन योर एग्जाम्स. ओके, सो स्मॉलेस्ट 3-digit नंबर दैट these numbers will divide exactly, ये हम फाइंड आउट करेंगे. ओके, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट 3-digit नंबर? सबसे छोटा नंबर क्या होता है 3-digit का? स्मॉलेस्ट 3-digit नंबर इज 100. देख लो, स्मॉलेस्ट 3-digit नंबर इज 100, क्योंकि उससे छोटा जो नंबर होता है 99, वो 2-digit का होता है, बट और वो 2-digit का सबसे ग्रेटेस्ट नंबर होता है 99. स्मॉलेस्ट 3-digit नंबर इज 100. सो 6, 8 एंड 12 वी आर हैविंग दीज थ्री. अब इन तीनों से डिवाइड होना चाहिए. सो हाउ टू फाइंड? फर्स्ट वी विल फाइंड अ नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ऑल थ्री. एक ऐसा नंबर निकालना है, ऐसा छोटा से छोटा नंबर जो इन तीनों से डिवाइड हो जाए. तो ऐसा नंबर कौन सा होता है? जो इन तीनों का एलसीएम होगा. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एलसीएम? देखो, लास्ट वाली वीडियो में यही तो बताया था. एलसीएम इज अ नंबर दैट स्मॉलेस्ट नंबर. एलसीएम क्या है? स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ऑल थ्री, जो तीनों से डिवाइड हो जाए. सो वी विल फाइंड आउट द एलसीएम ऑफ 6, 8 एंड 12. लेट्स फाइंड आउट 6, 8, 12. लेट्स फाइंड आउट 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12. देन 3 is not divisible, 2 2 ja, 2 3 ja. Then 2 3 is not divisible again, 2 1 ja, then 3. Now 3 1 ja 1 and 3 1 ja. So what LCM you are getting? 2 multiply 2 multiply 2 multiply 3. 2 2 ja 4, 2 ja 8, 3 ja 24. So LCM you are getting is what? 24. You are getting LCM 24. दिस इज द LCM. अभी तक पूरा काम नहीं हुआ है. ट्राई टू वॉच इट क्लियरली. पूरा काम अभी नहीं हुआ है. दिस इज ओनली व्हाट? LCM. सो व्हाट वी हैव टू डू नाउ? हाँ, व्हाट वी आर गोइंग टू डू एंड हाउ वी विल आइडेंटिफाई? नाउ चेक. We have to find out smallest 3-digit number that is divisible by all three, and it is the number that is divisible. ये वो नंबर है जो इन तीनों से डिवाइड हो रहा है. देखो, 6 के टेबल में 24 आता है, 6 4 जा 24. 8 के टेबल में 24 आता है, 8 3 जा 24. 12 के टेबल में 24, यस, 12 2 जा 24. इज इट? सो व्हाट इज स्मॉलेस्ट 3-digit? ये तो 2-digit का हुआ. स्मॉलेस्ट 3-digit. We will divide this 100 by 24. We will divide this 100 by 24. Now check. 100 is the smallest 3-digit number, so we are dividing 100 by 24. Now you all know 24 का टेबल तो हम लोगों को नहीं आता ना. So what we are doing? We will what? Multiply 24 into 4. 24 4 जा 96. 24 4 ja 96. You can see 4 4 ja 16, 4 2 ja 8 plus 1 9. 24 4 ja 96. How much remainder we are having? 4. How much remainder we are having? 4. Now what you have to do? बहुत ध्यान से देखना. What you have to do? बहुत ध्यान से. The remainder whatever you are getting, subtract it from your divisor. Divisor is what? See your divisor.
divisor is 24, divisor is 24, and remainder you are getting is 4. I am saying that subtract the remainder from the divisor, then after subtraction, what you will get? Subtraction, how, what you will get? 24 minus 4, 24 minus 4, how much you are getting? 20. ध्यान से ये वीडियो रिपीट जरूर करना. 24 minus 4, 20. Now add this 20 to 100. Add this 20 to 100. So the required 3-digit number is 100 plus 20. That means 120. This is the number, this 120 is the number that is exactly divisible by 6, 8 and 12. The smallest 3-digit numbers. छोटा, इससे छोटा कोई नंबर नहीं होगा. तुम चाहो तो निकाल के देख लो. हाँ, इससे छोटा कोई नंबर नहीं होगा जो 6, 8 और 12 से डिवाइड हो जाएगा 3 डिजिट का. आई एम talking about 3 digit. So the smallest 3-digit number that is divisible by what? 6, 8 and 12 is what? 120. It is 120. Okay. In this same way, question number 5 is asking the greatest 3-digit number that is divisible by 8, 10, 12. 8, 10 and 12. The greatest 3-digit number that is divisible by 8, 10 and 12. So how do we find the greatest 3-digit number जो divide होगा? सबसे पहले फिर से we will find out LCM. Find the greatest 3-digit number. अच्छा, greatest सबसे बड़ा 3-digit का नंबर क्या होता है? Greatest 3-digit number. What is the greatest 3-digit number? You will say sir 999. देखो ना, it is the greatest 3-digit number, 999. Okay, but we need to find a number, greatest 3-digit number जो इन तीनों से डिवाइड हो जाए. You will say sir ये तो नहीं होगा, it will not be divisible. Yes, you are correct. 999, it is not divisible by these. So how do we find? Again we will find out the LCM. So LCM of what? We will find out LCM of 8, 10 and 12. Let's find out. You all know how to find 8, 10, 12. 2 4 ja 8, 2 5 ja 10, 2 6 ja 12. 2 2 ja 4, 5, 2 3 ja 6. Then 2 1 ja 5, 3. 3 1 5 1. Then 5 1 1 1. So what is the LCM you are getting? How much LCM you are getting? You are getting 2 multiply 2 multiply 2 multiply 3 multiply by 5. 2 2 ja 4, 4 2 ja 8, 8 3 ja 24, 24 5 ja 120. This is the LCM you are getting. LCM. अब देखो सेम इन द लास्ट क्वेश्चन वी डिवाइडेड 100 ना स्मॉलेस्ट वाले को, इस बार 999 को. डिवाइड दिस 999 बाय 120 से डिवाइड करेंगे. सो यू विल से सर 120 से डिवाइड करना कितना टफ है ना. इट इज़ नॉट. 12 का टेबल रीड करो, इस 9 को छोड़ दो, देखो ये वाला 9 छोड़ दो, ये 0 छोड़ दो, 12 का टेबल. ओके, यू ऑल नो. सो 12 5 जा 60, 12 6 जा 72, 12 7 जा 84, हाँ 12 8 जा 96. Okay, so 8. Now why I am doing it? You will multiply. See, multiply is this 8 with 120. So 8 0 0, 12 8 ja 96. How much you are getting? 9. Then 9 minus 6, 3. You are getting 39 as remainder. This 39 as remainder. नाउ सी, लास्ट वाले से थोड़ा सा डिफरेंट है. लास्ट में हमने क्या किया था, 24 में से 4 सब्ट्रैक्ट किया था, 20 आया, फिर 20 को 100 में ऐड किया था. ओके, बट इन दिस वन व्हाट वी आर गोइंग टू डू, द रिक्वायर्ड जो हमें नंबर चाहिए, रिक्वायर्ड नंबर
डायरेक्ट इसमें से माइनस करना है. 999 minus 39. 999 minus 39. How much you are getting? You will get 960. 960. This is the number 960. The number, the greatest 3-digit number, 3 digit का सबसे बड़ा नंबर, that is divisible by 8, 10 and 12. जो 8, 10 और 12 से क्या हो जाएगा? Divide. That is divisible by 8, 10 and 12. This is the number 960. Okay. So in this video I think it will be a very long video if I'll explain more things. So please try to watch, try to solve the problems. Okay, try to solve all the problems remaining. I'll do in the next video.